एक एम्बर स्पिरिट, बिकॉज ये लगातार पिछले 2 मिनट में एम्बर स्पिरिट 2 बार मर चुके हैं। तो टॉप से नीड टू स्टॉप दिस एल्स उनका जो फार्म है इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। और टॉप लेन पे यहाँ पे थोड़ा सा कहेंगे कि जो साक्षा है वो थोड़ा सा हिडन गेम खेल रहे हैं। पेड़ तोड़ दिए, ओके, यहाँ पे अब स्टन टिकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये स्टन कनेक्ट हो चुका है और काफ़ी डैमेज यहाँ पे साक्षा को दे चुके हैं। बट साक्षा के पास एक मूवमेंट स्पीड है, अगर साक्षा को बचना है तो जो नेक्स्ट शॉक वेव होगी सेब की, उससे बचना बहुत ज़रूरी होगा। और ये कोशिश कर रहे हैं और ये टीपी करने की कोशिश कर रहे थे, बट शॉक वेव के साथ यहाँ पे साक्षा का गेम हो चुका है खत्म। निकाल टिप करने की कोशिश करेंगे बट नहीं, यहाँ पे स्पार्क के ILTW ने NIP के डबल ठप जो डबल 33 है उनको पिक ऑफ कर लिया है। तो एडवांटेज अभी भी OG के हिस्से में है, बिकॉज पोजीशन 4 एंड कोर 3 जो है निकाले। बट यहाँ पे वाइपर स्ट्राइक मार दिया मैग्नस पे और काफ़ी कोशिश करेंगे क्योंकि मैग्नस के पास कहते हैं ना स्क्रूअर है, वो कोशिश करेंगे। और इन्होंने TP कर दिया है, देखते काफ़ी टैंकी होते हैं मैग्नस, एज यू नो ये स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट पे बेस्ड है। तो उन्होंने काफ़ी कहते हैं ना बिल्कुल हिस्से से तरीके से खेला और यहाँ पर उनको एक जगह पे फ्रीज करने की कोशिश। अब जेरैक्स के पास वेंडेटा नहीं है कि वो यहाँ से बच पाए, ना स्पाइक कैरपेस है, 4 सेकंड में आएगा। बट बेन ने उनकी बिल्कुल लाइफ सक करके उनको काफ़ी कम HP में कर दिया था। जेरैक्स के मुंह पे हल्की सी शिकस्त की वही गेम का मोमेंटम चेंज होते हुए दिख रहा है, बिकॉज ऑल तो 10-7 से लीड कर रही है टीम OG। बट कहते हैं ना ये जो कुछ चुनिंदा 3 किले ज़्यादा देर एडवांटेज नहीं दे सकती हैं। तो यहाँ पे जो गेम है, अब टावर्स की और मैप की बात करी जाए तो लाइक डायर के पास काफ़ी अच्छा विजन और काफ़ी ज़्यादा मैप कंट्रोल है। Tier 1 उन्होंने बॉटम का लिया हुआ है और Tier 2 की तरफ उनकी नज़र है। 3 हीरोज़ रेडिएंट जंगल में हैं OG के और जा रहे हैं बॉटम पे, इनिशिएट कर रहे हैं स्वेन पे आइस बॉल कनेक्ट करके ट्रोल की लाइक एक एक्सिस यूज़ करके पीछे हो रहे हैं। अब ट्रोल को ऐसा लाइक फंसा लिया गया है, टॉल को अल्ट कमिट करने पे फोर्स कर दिया गया और उन्हें काइट करा जा रहा है। स्लीप यूज़ करके उनकी अल्ट वेस्ट की गई है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फाटा डोमिनेटिंग चलते हुए टीम फाइट में डिवॉर्ड करते हुए या रेडिएंट जंगल का कंट्रोल वापस लेते हुए जेरैक्स चुपचाप अपनी दुम दबा के भाग रहे हैं बेस की तरफ। यहाँ पे मैग्नस और एम्बर लाइक एम्बर को बेबी सिट करा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा W दिया जा रहा है, स्टैक फार्म दिलाए जा रहे हैं, फटाफट टॉप्सन को फार्म दिलाया जाए, बिकॉज ये गेम डिसाइडिंग गेम है। ये फेट डिसाइड करेगा इन दोनों टीम्स में से आगे कौन बढ़ेगा। और यहाँ पे दोनों टीम्स की तरफ से काफ़ी अग्रेसिव गेम प्ले, काफ़ी लाइक मार पिटाई से भरा हुआ गेम प्ले देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों टीम ने पिक्स ऐसी करी हैं कि थोड़ा सा फिजिकल डैमेज पे फोकस किया। बट यहाँ पर शायद साक्षा के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे आइस पाथ को डॉच करने की कोशिश करेंगे बट मैक्रोपायर का जो शिकार बन चुके हैं। अब यहाँ पे किसी भी सेकंड क्या है ना, जेरैक्स ने अपना स्टन टिक करना, उतनी देर में नोटेल का जो फायर डैमेज था 3rd स्किल का, उसकी वजह से उनको किल मिल चुके हैं 11-8। अब ये है हमारी स्कोर लाइन। टॉप्सन काफ़ी एग्रेसिव खेल रहे हैं, फेसबुक के साथ उन्होंने ड्रम्स बनाए हैं और ऑलरेडी उनके पास 2100 गोल्ड स्टैक है। तो अगला आइटम उनका मेलस्टॉर्म है। मेलस्टॉर्म को कह सकते हैं आप एक छोटी सस्ती बैटल फ्यूरी, आप आराम से फार्म कर सकते हैं उससे। और उसके बावजूद कहते हैं ना जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, जो लाइटनिंग इफेक्ट आता है, उससे आप एक्स्ट्रा क्रीपिंग कर सकते हैं। तो इट कैन बी अ ग्रेट आइटम टू फार्म। बट एम्बर को गेम के अंदर जो रेमनेंट डैमेज है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आप पाएंगे कूल डाउन एफिशिएंसी, ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना इंटेलेक्ट, काफ़ी डीप स्टैट्स है। यूजली नॉर्मल प्लेयर्स इतना ध्यान नहीं देते, बट गुड टू ESL हर्ट जो उन्होंने इतने सारे स्टैट्स अपनी गेमर ऑडियंस के लिए प्रोवाइड करे हैं, जिससे कि उन लोगों के लिए गेम के लिए जो व्यू है वो अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे देखा जाए तो एस एक अच्छी पोजीशन में है, स्लार्क इनिशिएट कर रहे हैं, सेप पे मारना चाहते हैं उन्हें, बट पाउंस का डैमेज जब से हटाया स्लार्क पे वो डैमेज आउटपुट नहीं, प्लस उन्होंने पाइप यूज़ किया है, थोड़े से स्टार्ट स्टील के स्लार्क के और पीछे होते हुए। एक स्लार्क एक काफ़ी क्रूशियल हीरो रहता है एक टीम फाइट में, आपके वार्ड्स को डिवॉर्ड कराने में बहुत लाइक साक्षात मदद करता है सपोर्ट्स की। और टीम फाइट शुरुआत करने में डिसएंगेज, इनिशिएट, लाइक एक स्नोबॉलिंग स्लार्क जो माइडस पिकअप है, इसके बाद उनका शैडो ब्लेड भी आ चुका है। तो धीरे धीरे इस गेम पे वो पकड़ बनाते जा रहे हैं अपनी। NIP के लिए गेम काफ़ी क्रूशियल है। NIP अभी TI चैंपियंस को फेस कर रहे हैं OG को, और उनको घर का रास्ता दिखाने का उनके पास मौका है। 1-1 पहला गेम उन्होंने बहुत कन्विंसिंगली जीता था और ये गेम 3 तक अब बात आ चुकी है। गेम 2 में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था, बट ये स्वेन जो पिकअप है, ये मुझे लग रहा है ये टीम फाइट का लाइक जो टाइड है वो चेंज कर पाएगा और कुछ बड़ा करके दिखाएगा। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे स्लार्क का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्लार्क बहुत स्क्विशी हो रहे होते हैं, क्योंकि जब से उनका जैसे आपने बताया कि पाउंड्स का डैमेज छीन लिया है, साथ साथ लीश को थोड़ा कहते हैं ना ओके यहाँ पे जैसे सेंट्री लगाकर सीधा आइस पाथ कनेक्ट किया उन पर,
और अब देखते हैं नोटेल क्या इस चीज़ को कैपिटलाइज कर पाएंगे। उनको स्वेन ने अपनी थर्ड स्किल दिया है वॉरक्राई, जिससे उनका आर्मर उनको स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है अभी, बट उनके पास गॉड स्ट्रेंथ दी क्योंकि उन्होंने रिसेंटली गॉड स्ट्रेंथ यूज़ करी थी टावर लेने के लिए। तो 33 के लिए काफ़ी मुश्किल होगा यहाँ से बच के निकलना, बट सेफ ने यहाँ पे उनकी किल निकाली शॉट वेव के थ्रू और एक काफ़ी कंप्लीट था। ऑल तो यहाँ पे किल्स में भले लीड कर रही है टीम ओजी, बट अगर आप टावर की बात करेंगे तो टावर का कहना बिल्कुल अलग है। बॉटम के टीयर दोनों जिंदा है, टीयर 1 और टीयर 2, मिड का टीयर 2 है, बट टॉप बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर आप यहाँ पे एनआईपी के टावर्स की बात करेंगे तो टॉप, मिड और बॉटम तीनों टीयर 1 जा चुके हैं, टीयर 2 ऑलरेडी तीनों लेन में बचे। तो एक टावर की भली एडवांटेज है यहाँ पे एनआईपी के पास, बट देखते हैं कि कब तक ये एडवांटेज रखते हैं, बिकॉज ओजी का गेम प्ले हमेशा से इतना कहते हैं ना हरासिंग रहा है, इट्स नॉट ईजी जब तक उनको पता है। और यहाँ पे जेरेक्स ने पहले स्पाइक कैरेक्टर से यहाँ पे स्टार्ट की अल्टीमेट फेल करी, उसके बाद ओके इट वाज अ क्लीन किल। यहाँ पे बेन को यहाँ पे इंस्टेंट शट डाउन कर कर उनकी किल निकाल ली है। धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी गलतियाँ एनआईपी से हो रही हैं, ऑल्दो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे गॉड स्ट्रेंथ पिक करके स्वेन अंदर तो आए हैं, बट देखते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अभी स्टॉर्म हैमर अभी तक कमिट नहीं किया है उन्होंने, 3 बंदों का स्टॉर्म हैमर मारा उन्होंने और यहाँ मैक्रो फायर की वजह से बिल्कुल जोन आउट कर दिया गया है। स्वेन को मारा जा रहा है, स्वेन को मार के फिर से रोशान की तरफ जाएंगे। एक रोशान पहले उनका बेन ऑलरेडी पिक्ड ऑफ था, उनके पास उनकी टीम की काफी डिसेबल्स में वीक हो गई थी और उस बेन की एब्सेंस इस गैंग में एनआईपी को देखने को मिली, बिकॉज बेन काफ़ी कुछ कर पाते हैं इसमें। और यहाँ पे टॉपसन ने एजेस ऑफ इमॉर्टैलिटी उठा ली है और काफ़ी ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि थोड़े से स्क्विशी होते हैं स्टार्टिंग के अंदर जब तक उनके पास आइटम नहीं आते हैं। ऑल दो फार्मिंग स्पीड है क्योंकि उनके पास सेब का सेकंड स्किल है एम्पावर, उसकी वजह से उनको क्लीव डैमेज मिलता है और वो जल्दी फार्म कर पाते हैं, जो कि इस वक्त टॉपसन एंड ट्रोल को काफ़ी मदद करेगा। ऑल दो अभी टॉपसन काफ़ी नीचे है फार्म में, 8600 गोल्ड पे, बाकी की प्लेयर्स 11000 गोल्ड लीड पर है। तो अगर ऐसे ही चलता रहता है, सेब अपनी टीम को, सेब को पता है कि किस तरीके से वो अपनी प्लेयर्स को बेबी सेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं टीम्स के अंदर, गैंग्स के अंदर। तो अब जो फाइनल एक गेम होगा, फाइनल गैंग होगा, वहाँ पे जो इनिशिएशन होगा वो तो भाई ऑब्वियस ही बात है रिवर्स पोलैरिटी से होगा, आरपी से होगा, साथ साथ वहाँ पे रेवलेंट आएंगे, वहाँ पे ट्रोल अपना बिल्कुल सर्कुलर अटैक करके आएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है उनके लिए। बिल्कुल। और सेब का अगला आइटम क्यूड अप है लोटस ऑफ, जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल आइटम मेरे हिसाब से इस गेम में आएगा। आपको लोटस ऑफ एक स्लार्क और बेन और वाइपर के डिसेबल्स के अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा, एक बंदे को काफ़ी टैंकी बनाएगा। बट यहाँ पे फाइट ब्रेकआउट होते हैं एंशिएंट स्टैक के पास, स्वेन राइट क्लिक कर रहे हैं एम्बर को, बट वो कमिट नहीं करना चाहते। पीछे से आइस पाथ आई है, बेन को लेके मार दिया गया है। यहाँ स्वेन को भी पीछा करा जा रहा है ट्रॉल। मीनवाइल स्लार्क चाहते हैं फाइट करना, बट उनके पास डैमेज आउटपुट ही नहीं है कि वो लड़ पाए इस फाइट में। स्लार्क बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, एस को समझ नहीं आ रहा है उस फाइट में कमिट करे नहीं करे। फाटा को यहाँ पे घेर लिया है 3 हीरोज ने और उन्हें मार चुके हैं। स्लार्क अगेन, स्लार्क की प्रेजेंस जो है इस टीम फाइट में किसी भी एक डैमेज डीलिंग कंपोनेंट नहीं आ पा रहा है स्लार्क के थ्रू। स्वेन बायबैक करके एक डायबैक हो चुका है उनका, कुछ जरूरी नहीं था, बिकॉज विदाउट गॉड स्ट्रेंथ स्वेन का जो वजूद होता है, जो कहते हैं ना इमेज, जो इम्पोर्टेंस होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। बट ये डायबैक अननेसेसरी था, अब से ज़रूरी नहीं था, इसके बिना भी गेम के अंदर आगे बढ़ सकते थे बिकॉज इतना लूज नहीं हुआ था अभी तक। बट इस डायबैक ने काफ़ी लीड यहाँ पे ओजी को दे दी है। टावर की बात करें, टावर लीड अब उनके पास आ सकती है, 9K गोल्ड है एडवांटेज। ऑल्दो एनआईपी के जो एस हैं उनके पास फार्म है, उनके पास मिडास है, पावर थ्रेड्स है, शैडो ब्लेड है, साथ साथ इको सेबर है, बट डैमेज की अभी भी कमी है। उनको पता है कि सामने सेप जैसे प्लेयर है जो टैंक है, और शॉक वेव को जो इफेक्ट दिया है जिससे कि थोड़ा सा पुल बैक होता है एनिमी, वो भी बहुत ज़्यादा अनोइंग हो सकता है। टॉपसन से बात करेंगे, टॉपसन का एम्बर स्पिरिट का जो फार्म था वो काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। साथ साथ अब जो तीनों प्लेयर हैं, आप देखेंगे 3 जो मेन प्लेयर्स हैं, मैग्नस, एम्बर एंड ट्रोल, वो तीनों टॉप पे। और ये यहाँ पे रेट इनके प्लेस के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे लेशरैक को इंस्टेंट मेल्टडाउन किया है, फाटा के लिए काफ़ी मुश्किल। अगर ये गैंग खाते सीधा टियर 3 जाएंगे और एक और किल एम्बर पे चढ़ेंगे, देखते हैं चढ़ते नहीं चढ़ते, और सीधा सीरिंग चेन स्लाइट ऑफ फिस्ट लगाकर बेन को पिक आउट कर लिया है। बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था ये, जो गलती है ये एनआईपी को बिल्कुल मजबूर करेगी इस गेम को हारने के लिए, कॉज अब वो टियर 3 पे चढ़ चुके हैं। ये क्लीन है, 22 मिनट के अंदर अगर कोई अपना सेट ऑफ बैरक्स हार रहा है तो ये गेम उसके हिसाब से नहीं चलती, बिल्कुल नेगेटिव हिस्से में जा चुकी है एनआईपी के लिए। एनआईपी को बहुत रिग्रेट होगा क्योंकि ये गैंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, उनको टियर 2 दे देना चाहिए था और टियर 3 हाई ग्राउंड पे खेलना चाहिए था। बट एक छोटी सी गलती उनके लिए बहुत
गलत यहाँ पे साबित हो चुकी है। बिल्कुल 1 मिनट में उन्होंने अपनी गोल्ड लीड जो 9K का डेफिसिट था वो 14K का डेफिसिट हो चुका है। 5000 गोल्ड आपने सामने वाली टीम को एक तरह से तोहफा बना के दे दिया। और उनके पास जकीरो है, जकीरो एक बहुत अच्छा हीरो है अपने मोल्टन जो थर्ड स्पेल है उसका फायर, उससे वो टावर्स मेल्ट कर देता है। और यहाँ पे स्लार्क के पास उतना डैमेज नहीं है कि वो किसी को मार पाए, और डैमेज है भी तो उनके पास फॉलोअप इतना है ओजी के पास अपने हीरोज को प्रोटेक्ट करने का, विजन इतना है कि वो स्लार्क को उनको पता है कि एनिमी हीरोज कहाँ हैं, और फाइट में वो उस चीज़ का पूरा उपयोग करें। एम्बर के द्वारा ऑक्ट्रीन पिक करा गया है, तो ऑक्ट्रीन एक एम्बर पे काफ़ी घातक आइटम साबित हो सकता है। फाइट में जो उसको रीजन मिलेगा अपने स्पेल्स के थ्रू, एक रूट पे जो रीजन मिलेगा, प्लस जो कूलडाउन रिडक्शन है स्लाइट ऑफ फिस्ट का 4 सेकंड 3 सेकंड में एक स्लाइट ऑफ फिस्ट बहुत ज़्यादा डैमेज डीलिंग होगा फाइट में। इस एम्बर को कंट्रोल करने के लिए उनके पास 2 लॉकडाउन्स 3 लॉकडाउन्स है, बट उनका स्वेन भी इतने आगे नहीं है कि वो इस फाइट को कंटेस्ट कर पाए। आइटम्स की बात करी जाए, यहाँ एम्बर पे एजिस है, ऑक्ट्रीन है, मेलस्ट्रम है, बल्कि और स्वेन पे सिर्फ 2 ब्रेसर और एक वॉन्ड है और पीटी है, तो स्वेन इज नॉट इन द पोजीशन टू फाइट एट ऑल। बिल्कुल एग्जैक्टली और उनकी जो आइटम बिल्ट है वो फार्म भी नहीं कर सकते, और जो उनकी जो सेकंड स्किल है जहाँ पे उनको क्लीव मिलती है वो उन्होंने बिल्कुल मैक्स नहीं करी है। ये जैसे आपको बताया था कि सपोर्ट स्वेन आजकल मेटा में बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ का जो फ़र्क है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 22-10 25 मिनट हो चुके हैं गेम के अंदर, रूम स्पॉन हो जाएंगी। अभी 4 स्मोक हुए हैं यहाँ पे, जकीरो, ट्रोल वॉलर, निक्स एंड मैग्नस का, कॉज उनको पता है एम्बर उनको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कॉज उनकी मूवमेंट थोड़ा सा कहेंगे ना, यहाँ पे हल्का सा गैंग हुआ है, कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे वाइपर बिल्कुल स्टन हो चुके हैं, बिल्कुल ब्रिंग करके स्कोर करके उनको बिल्कुल अलग से जोन आउट कर दिया और काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं। जो 33 हमारे जो स्वेन है वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर ये इनको भी यहाँ पे फॉल लेना पड़ेगा। ट्रिपल किल हो चुके हैं, जीजी कॉल किसी भी सेकंड हो सकता है। दे आर गोइंग फॉर द टियर 4, आई डोंट थिंक ये अब सर्वाइव कर सकते हैं, कॉज 40 सेकंड के अंदर जिस स्पीड से वो तोड़ रहे हैं वो 2 बार थ्रोन तोड़ सकते हैं। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर अगले 10 सेकंड में आ जाएगा जीजी कॉल, और लिस्टैक ने स्टन मारने की कोशिश की, अफसोस ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट इट। यहां पे फाटा ने बायबैक कर रहे हैं, वाइपर के बायबैक को रिस्पेक्ट करते हुए ओजी एकदम पीछे हो गए। उन्होंने बायबैक फोर्स आउट किया, अपनी गोल्ड लीड थोड़ी और एक्सटेंड की और पीछे हो गए हैं। तो ये टीम फाइट हमारे जो ओजी का एक गेम प्ले है, ओजी का जो ये प्ले स्टाइल है एकदम डिसिप्लिन, जैसा हमने गेम 1 में देखा था डिसिप्लिन, वो हो गया है। बट थोड़ा सा मैं कहूँगा एनआईपी अपना एक जो होता है ना आपका गेम से एक मेंटल कनेक्शन होता है और एक इमोशनल कनेक्शन होता है, तो वो इमोशनल स्केल पे उतना कनेक्शन मुझे फील नहीं हो रहा है कि एनआईपी एक फ्लो में नहीं है, अपने टीम का ऑर्गेनाइज्ड नहीं है फाइट्स में थोड़ा। लेकिन ये फाइट एकदम जिबेटेड सा हो गया सिनेरियो। निक्स आगे आया, निक्स ने वाइपर का स्पेल बेट आउट किया, अपना कैरेपिस यूज किया, वाइपर को स्टन करके स्क्योर करके ले गए अंदर, और वहां से फाइट शुरू करके उन्होंने 3 हीरोज गिरा दिए। ये मैंने काफी ज्यादा देखा है आजकल एनआईपी जो बाकी नेक्स्ट असैसिन्स कर रहे हैं कि जैसे एंटी में अगर बैटल फ्यूरी बना के फार्म कर रहा है तो उसके क्लीव के सामने जाके कैरेपिस यूज करो, जिससे क्लीव से उसका ऑन हो जाए। बट इतनी देर में यहाँ पे गैंग चालू हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल आइस पाथ से स्वेन को बिल्कुल स्टन कर दिया, और यहाँ पे जो हमारे एम्बर स्पिरिट है वो बिल्कुल इतना एग्रेसिव अंदर जा चुके हैं, वो मैजिक डैमेज यहाँ पे खेल रहे हैं और स्वेन को यहाँ पे मेल्ट डाउन कर दिया, और काफी मुश्किल होगा स्वेन के बिना इस गेम के अंदर हैंडल करना। रोल वॉलर ने बीकीपी पॉप करके अंदर घुस चुके हैं और सीधा बेन को कर दिया उन्होंने गेम से बाहर। 27-10 से लीड कर रहे हैं, टियर 3 पे फाइट हो रही है। एम्बर स्पिरिट को जरूरत है कि निकल सके, बट इतनी देर में ब्लिंक, आरपी और 2 प्लेयर इंस्टेंट मेल्ट डाउन कर दिए स्पार्टा के अल्टर ब्लू ने। सीधा एनआईपी के शाक्सा और फाटा और जीजी कॉल हो गया यहाँ पे गेम 3 ओजी 27 और जो हमारा डे 1 का लूजर ब्रैकेट था, गेम नंबर 3, ऑल्दो गेम नंबर 1 काफी कन्विंसिंग आने के बाद गेम नंबर 2, गेम नंबर 3 कन्विंसिंग तरीके से जीतकर एनआईपी को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं दिया कि भाई किस तरीके से, किस डेविल से उनका सामना है। दिखा दिया कि सीनियरिटी क्या होता है, हम भाई एक्सपीरियंस है, वी नो हाउ टू हैंडल दिस प्रेशर। एनआईपी की प्लेयर्स हैरान है कि कितने हाई मोमेंटम से, हाई पेस से गेम चला और उनको मौका तक नहीं मिला इस गेम के अंदर अपने आप को प्रूव करने का। पीटर पैंडैम बहुत ज़्यादा नाराज है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, बिकॉज ऐसे नहीं खेला जाता है डोटा। डोटा इज अ गेम ऑफ डिफेंस ऑफ द एंशिएंट्स, और यहाँ पे एंशिएंट बचाने की सिचुएशन में नहीं थी एनआईपी। ऑल्दो गेम नंबर 1 के बाद इट वॉज लुकिंग वेरी टफ टू से कि ओजी वापस कर पाए। गेम 2 के अंदर फ्लॉलेस गेम प्ले दिखाया, गेम 3 वॉज टोटल ब्रूटल नेचर गेम, और वहां पर ओजी ने दिखाया कि वाई दे आर TIA चैंपियन, कैसे उन्होंने PSG LGD को भी हराया था। बट अभी के लिए डे 1 इज ओवर, वी विल बी बैक टुमारो। अभी के लिए मैं और हमारे जो कैंडी है सुबह 4 बजे साइन ऑफ कर रहे हैं, बट एनालिस्ट डेस्क पे टोबी वैन एंड डेरा आर वेटिंग फॉर अस। देखते हैं कि उनकी क्या राय है इस गेम पे। बिल्कुल
And here we go. No Tail. Since for game one, NIP had you guys 5 games straight in terms of winning, and till of course game 2 and 3, you broke that streak. What have you discovered? What have you adjusted to kind of get to that point? I definitely think that we're learning a lot more about ourselves every game. We're still a very young team. Like, I think we have a long way to go, but we're slowly discovering ourselves here. I think as for game 1 against NIP for this main stage, we definitely didn't play our A game. We were maybe like a little hesitant on certain moves, very respectful. Definitely they're a team that we respect a lot because, yeah, they've been doing well, not just against us, but overall, great players. Yeah, I don't know. It's mostly just looking at ourselves and trying to get better. Definitely did that. We were just talking about this before we went into the interview. PPD spit out some fire pre-match, and you just found out just now recently. How did the team react to that for those who heard it before the game? I actually don't know. Like, I just heard it after the game. I think yes, and maybe somebody else heard. That only works as fuel to the fire, you know. Yeah. That only works as motivation, at least for most people. So, guys at home, do your prep before you play a team. There you go. Yeah, no pizza before a big match. No Tail, I wanted to ask really quickly. How did you feel when you had the Seb TP to the enemy fountain? Is that a new strat that you're working on? I mean, what was your reaction to that? I just give him a little something, you know. Give him a little something. Yeah. Okay, I hear you. It worked. You guys won that game, though. You guys won that game. Mental damage. Mental damage. Mental damage. All right, well, No Tail, congratulations on moving on. Of course, we will see you tomorrow, and good luck for the rest of the tournament. Thank you so much. Give a round of applause to No Tail, everyone. Yes, congratulations to OG. They march on, and they have defeated Ninjas in Pajamas after a little bit of fire before the game. All is good in love and war and all that. 8 times in a row they've won with the Troll. 11 times in a row they've won with the Mag. Those 2 star performers on the team, along with a whole host of other things that we could probably talk about. But really, Kyle, was this lost in the lanes? I'd say I kind of agree with No Tail. Yeah? That was what felt like just a strategic misplay. Lack of prep. Why is the Lesh playing 4? Like, that's just, you took your tempo hero. I'm like, okay, this guy can snowball. He can buy space for the Slark. You know, you can sort of swarm these team fights and just kill a couple of targets immediately. Now you have a Sven and a Viper and a Slark rushing Mez. It's just so slow and clunky. No natural playmaker. And Lesh is just feeding to Ember Troll the entire game. Not to mention, we're sitting here like, oh, Mag Ember, okay. But we knew it. OG knew it. Sure. Yeah. Doesn't feel like NIP did. Yeah. I mean, it's unless they thought they could bid it, which is also, you know. With that? Well, I don't know. I'm just saying maybe they thought they could bid it and they had prepped. I'm not saying they didn't prep, but to your point about the 3 and 4 positions, like, that's, I play a lot of 3 and 4. I look at that game, I see core Sven, I'm like, I don't want to play that. No. I don't want to play offlane Sven against this. I'm playing into a Troll. I don't really feel I'm that effective versus this Ember Magnus. Like, I don't really feel like I have much of a game. No. And then that just means my Leshrac 4 feels weaker because he's support rather than offlane. Not to mention, he went 4-0-4. Yeah. Like, you're a core Sven, but you're skill building like a support. You can't kill creep waves. Sox's Lesh just neutered, and it feels like both heroes are worthless instead of a core. Like, core Lesh is never not valuable just because of Mag's edict. Like, yeah. I just don't know how you go into an elimination game against OG and let him have Troll, Ember, Mag, and Nyx. I don't know what kind of pizza toppings Peter likes, but I think tonight he'll have it with an extra helping of salt. Sorry, Kyle. It's a little late. I think you've just broken Kyle. I'm fine. I'm fine. I'm just enjoying myself. We talked about streaks. We talked about the positive ones. The Mag, the Troll, on great streaks for OG. The Sven. Oh, boy. 1 in 14 for the tournament. And, yeah, this hero just has looked... It's just looked awkward. And part of the problem is it's always being picked early in drafts. And it's just felt like it's done nothing in the support role, in the 3 role. We all agree, if your name's not Ramses, safe lane Sven sucks. So, yeah. Yeah.
It's been a bit rough. In terms of the way that NIP have gone out, Cat, obviously it's disappointing for them. Very. They showed signs that there were some weaknesses during the group stage as well. So it's not like they've had a flawless tournament and then kind of got unlucky who they've met. It's kind of was on the cards a little bit, wasn't it? Yeah, and that's particularly concerning because I think this is about the time of the year where you're beginning to decide whether or not your team is a team that is going to go to TI and do well, or you have to make some changes. And like, not really the best placing here at ESL 1 Katowice. That's definitely something that's going to be on the table. Do you think you think they're already going to start thinking about changes? I mean, they're a top Maybe 6 not team yet. in the DPC right now. Surely they'll leave it one more major. It's about the momentum, though. Yeah. Right? Like, you look at OG playing, and sure, I'm not going to say that they're definitely top 10. You could make an argument they're not top 5 currently yet. Yeah. But they're on the rise. You talk about those DPC standings. Those DPC standings are with mind control as a stand-in. Sure. That's the narrative right now as NIP that you have to live with, that you played your best Dota of the season with 1/5 of Liquid. But we are, I don't want to have us overreact to this. We don't know how much they prepped coming into the tournament. OG definitely were hungry here. Yeah. Nip did, I believe, one of the first spots to the major. Like, we got to see how they perform at Dream League. Then maybe look to Judgment. But this major will most likely be the turning point for a lot of these teams on the bubble. The Fnatic's, maybe the Chaoses, the Mineskis, NIP, like all these squads. You look at the top, it's like, wow, VP Secret, Liquid, EG, these guys look untouchable. We can't beat them right now. What the hell do we do? All right, hold that thought, because we're going to talk more about that when we come back. But first of all, let's check in for the final time this evening with Purge. To truly understand what happened in Game 3 there, I think you have to remember how OG's been playing so far this tournament, and even how things have been going in Dota a week before this. Everyone is buying Midases, so when they go in Game 1 and Game 2, and they don't buy Midases, they're trying to say, we're going to play you so strong early game that we can just throw you off and win the game regardless. So what happened in Game 3, in my opinion, is OG played that way for the first 2 games, and then they said, we're going to play entirely standard. We're going to play AFK farm basically with Magnus and Cleave heroes, and I think that this threw NIP on the wrong footing. OG did do their typical early aggression where they defend the safe lane and take the enemy tower. Soxa ended up sniping that one using Diabolic Edict, so he did get some value out of his hero at least. And then later on, what they basically just did was AFK farm. They killed stacks. In the other replays, I couldn't find that many instances of OG AFK farming other than the Keeper of the Light. They still did fight on the bot lane, but if you remember what happened in the first 2 matches, it was OG 5-man running at the enemy team. So when Thompson runs in and does something that looks really stupid, everybody on Ninjas in Pajamas shows up. They're not farming, they're not getting gold. On the bright side for them, Ace has grabbed a Midas on Slark, so he can retain at least some of that gold disadvantage and make it less bad, but they do still get some kills on the map, and it just kind of gets worse, just more and more creep hitting. It's a lot of LTW, excuse me, hitting neutrals. And then as the split farming happens again, sometimes Nip realizes they need to go get some kills, so they do eventually put some effort into trying to kill Magnus, for example. They can't even kill Magnus. He's got a hood first. He didn't go blink. They know they're not fighting. They're farming. Get a pipe afterwards. Now he's really hard to kill. And they get maybe this next kill. But essentially what's happening is OG just does this, and they do this. And then all of a sudden, Nip has to say, okay, we got to go gank this guy. And then they say, okay, we got to gank this guy. And then they go, okay, we got to gank this guy. And they keep doing all this running back and forth. In the meantime, OG's just hitting creeps, and they get a super easy win. Thank you very much, Purge. Yep. Yeah. Perfect way of explaining what they did in Game 3. It was totally different. It's cool because that same motion, like across map, when you're winning the game, I always think of it as sweeping, right? Because you kill the creep waves, you just move aggressively towards the enemy side of the map. You're chasing them, but you're also like clearing the map of creep waves and jungle. In the meantime, Nip, they're chasing. They're looking to pursue and always constantly. in the wrong place at the wrong time as well. And he also made a good point about Seb not rushing the blink dagger. I saw that in the games that all the teams that lost today ran. Yeah. You like specifically Aster. You were rushing blink on LC and Tiny. They can't get something done with them in 2-3 minutes. Well, you've lost. Seb, that hood pays for itself when he survives there because it buys space. Easily. He survives. You'll always get the blink in time for that critical engagement when you're playing a draft in this way. Itemize for your survivability and your ability to stay on map. Yeah, you might not deal more damage necessarily, but because you maybe have to heal 1 or 2 less times,
you're on map longer, you're farming more gold, you're getting more experience, you're winning the game. Yeah. And to add to your point about like the whole chasing, what I really like to add to that is the fact if you look at just the geography of what the map is, when you are on the defensive, when your lanes are being pushed in and you're chasing somebody, as they back away, the map is getting wider. Right? So you are extending yourself to the corners of the map, which in turn means there's just more space for the enemy team. When you are pushing into the enemy side of the map and you are pushing into and you're trying to get those fights and they're retreating from you, the map is closing off and it makes it more efficient for you to move around the map. And it's just a snowball effect. We've got economics, topography, and space travel. I love We it. cover everything on this Beautiful. panel. Brilliant. It's fantastic. Let's check in with the bracket and show you where we are at ESL 1 Katowice with just 2 days remaining. We didn't see any matches in the upper bracket, of course. We will see them tomorrow, however, as Team Secret and Gambit Esports go head-to-head for the second time in ESL 1 Katowice. There was a 2-0 in the group stages from Team Secret, the final game of that group, which decided their top 2 positions. But they both made it through to the upper bracket final and will guarantee themselves a top 3. We'll see that match tomorrow. The 2 teams that dropped down, of course, you've already seen Ninjas in Pyjamas depart from the tournament as we look at the lower bracket right now after going down 2-1 in our last match of the evening against OG. OG confirmed themselves as a top 4 team here, and they will play the winner of Fnatic versus Mineski, an all SEA battle, which we're looking forward to tomorrow. That should be some proper fireworks in that one as well. We usually get good games between 2 SEA teams. Yep. Their own little meta. I'm really hyped to see the Moon versus Abed matchup. I've been hyping it up. Every game we've seen Mineski pull off, the games that they won, even the game they lost today, he was the standout player. He was. Well, that's the benchmark, too. We've been talking about the need for Moon to show up and be that superstar player for Mineski. We're going to see if he can hold up against a guy we already know is a superstar in Abed. Yep, absolutely. One final question before we close the show down. I haven't asked any of you so far because I know that you hate being asked about MVPs too early in the tournament, but we've had 4 days of play now. Just one name from each of you who stood out for the MVP Mercedes-Benz. Come on. Let's be real. All right, we all know Nisha's playing on his home soil here, and the biggest question in MVP to me right now is what color car he's driving home. Okay. Cav? Zai. Kyle? God, it's tough. I don't want to name someone on Secret because you can make an argument for any of them. Yeah, sure. I'd Fair rather enough. pick someone that was even like playing today. I think Moon's got an argument. If his team were to go far, All right. looking at OG, ILTW has been on fire. He's really been great. yeah. He the difference in his level of play in what we saw in the qualifiers and then in this tournament, night and day, this guy has the trust of his team. Yep. All right. Well, thank you very much, all 3 of you. It's been another great day of Dota 2 action here. The first day inside the Spodek Arena has come to an end after 3 very long series, but very enjoyable series as well. We hope you've enjoyed the coverage. We know at times it's been a bit slow, but hopefully we'll be much faster tomorrow. And thanks for all your patience today with all the issues that we faced in getting the players back on stage. But that is it. Day 4 has ended. We're down to just 5 teams, and tomorrow we'll eliminate 2 more as we end up with just 3 heading into Sunday's grand final day. Thanks for tuning in. We'll see you tomorrow.
This arena is about ready to explode. Welcome to ESL 1. Let's get this started. Ladies and gentlemen, let's go. Revving up the epicenter comes in. Oh, it's a big one as well. Look at this damage. The BKB, the Black are ready to go. GG. For the first time, ESL 1 is coming to Mumbai, the commercial capital and the heart of India. Ninjas in Pajamas will have their chance to claim the title. Jack it up.